Good morning, class. Today we're going to see the last part of this chapter, our skeletal system in the skin. In the previous videos, we covered our skeletal system. So today we're going to discuss about our skin. Okay. The objective for today is we'll be able to identify different layers of skin and explain their functions. ठीक है, हम अपने skin के different layers identify कर पाएंगे, ठीक है, उनको ढूंढ पाएंगे एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस. दैट मीन्स वो क्या क्या काम करते हैं वो हम डिस्कस कर पाएंगे, राइट? So let's begin with the example I used in the first video. So if you remember, I used an example of a burger, right? So if this burger is the human body and the contents inside this burger are the internal organs, then stick, okay, the stick acts as the human skeleton system which provides support from inside. But as you know, if I order a burger from restaurant, this burger is not coming in this form, ठीक है, ऐसे खुला होके बर्गर को नहीं भेजेंगे ये लोग, ठीक है. How do they send the burger? They send the burger in this form, wrapped in an aluminum foil or some covering, right? So what does this covering do is it helps protect the burger from the external environment, right? So this stick is there to give support from inside, but this layer is there to give protection from outside. So this is what the human skin does for the human body, right? If you're asked what is the skin and what is the function of skin, the answer would be the skin is the outermost covering of the body. Okay, अपने बॉडी में जो outermost covering होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्किन बोलते हैं. एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन? वो क्या काम करता है? द फर्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स आवर इनर बॉडी, ठीक है. अपने बॉडी में जो इनर ऑर्गन्स, ब्लड और जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है. ओके, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वाटर, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डस्ट, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम जर्म्स एंड एवरीथिंग, राइट? And what is the second work it does? It helps in the sense of touch. ठीक है. So as you know, there are 5 senses, right? There's eyesight, there's hearing, there is smell, there is taste, and there is touch. Okay, the human skin is responsible and helps in the sense of touch. Okay, next we're gonna see the different layers of skin. Okay, there are 3 basic and main layers of skin. Those are epidermis, dermis and subcutis. Okay, the outermost layer is called epidermis, below that we have dermis, and below that we have subcutis. Okay, now we're going to draw a table like this, and one by one we're going to see what are the functions of the 3 layers of skin. First there's the epidermis, right? So what does the epidermis do? It is the outermost layer of the skin. अपने skin का सबसे बाहरी हिस्सा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. ओके, इट प्रोवाइड्स अ वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन टू अ बॉडी, ठीक है, अपने बॉडी को बाहर से वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन देता है, राइट? एंड इट कंटेन्स अ केमिकल कॉल्ड मेलानिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्किन टोन. ठीक है, इसके अंदर एक केमिकल रहता है, उसका नाम क्या रहता है? मेलानिन. ओके, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्किन टोन. एज यू नो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्किन कलर, राइट? दिस केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. विल डिस्कस मोर अबाउट मेलानिन after some time. Okay, next you're going to see what is a dermis. Okay, dermis क्या होता है? So dermis is the second layer of skin below epidermis. ठीक है, dermis क्या होता है? ये second layer को dermis बोलते हैं, right? It contains nerves, hair fossils and sweat glands. Okay, it contains nerves. Nerves क्या होते हैं? Nerves are the पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ओके, आपको जो फीलिंग होती है टच की एंड एवरीथिंग, दैट्स इज बिकॉज ऑफ द नर्व्स, राइट? एंड हेयर फॉसिल्स मीन्स आपके जो स्किन पे जो बाल होते हैं ना, ठीक है, उनके जड़ों को हेयर फॉसिल्स बोलते हैं. ओके, एंड द लास्ट इज स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड्स मीन्स जहाँ द होल्स थ्रू विच स्वेट कम्स आउट. ओके, आपका पसीना जहाँ से निकलता है ना, वो जो होल्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज स्वेट ग्लैंड्स. सो दिस ऑल आर कंटेन्ड इनसाइड द डर्मिस. ठीक है, इस लेयर के अंदर ही सारे वो चीज़ रहते हैं. ओके, एंड द मेन फंक्शन ऑफ डर्मिस इज दैट इट हेल्प्स इन द सेंस ऑफ टच. सिंस डर्मिस हैज़ नर्व्स, डर्मिस के अंदर नर्व्स रहता है, राइट? बिकॉज ऑफ दैट इट हेल्प्स इन द सेंस ऑफ टच. आप जो टच करते हो, फील कर पाते हो किसी चीज़ को, राइट? दैट इज बिकॉज dermis has a lot of nerves. Okay, and the last part we're going to see is
the subcutis or hypodermis. So what is this? This is the innermost layer of skin. Skin का सबसे अंदरी हिस्सा, right? And what is it made up of? It is made up of fat. ठीक है, इसके अंदर fat होता है. You know fat, right? Fat is basically when you eat food, it has different contents, right? Carbohydrate, fat, proteins, and etc. Fat gets stored in under the skin in this layer. ठीक है, subcutaneous layer में अपने body में fat store होता है. Okay, and we have blood vessels. Blood vessels means your arteries and veins. Okay, जहाँ से आपके blood flow होता है, right? And the last is you have tissues. What is tissue? Tissue is nothing but a collection of cell. Okay, you know cells, right? The smallest unit of life is called as cell. So tissues are nothing but collection of cells. And what is the work of subcutis? The main work of subcutis is it maintains body temperature. ठीक है, सबक्यूटिस का मेन फंक्शन क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है. ओके, ए ह्यूमन बॉडी नीड्स 37 डिग्री सेल्सियस टू ऑपरेट नॉर्मली. ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे हुआ ना अपने बॉडी का, देन द बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, राइट? सो दिस लेयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग दिस बॉडी टेम्परेचर. अंडरस्टूड? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेलानिन एंड व्हाट इज इट्स पर्पस, राइट? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि देर आर डिफरेंट पीपल हियर, राइट? एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट स्किन कलर, राइट? सो द बेसिक thing which separates them is melanin in their skin. Okay, so let's see what is melanin and what is its purpose. So melanin is a chemical in our skin which protects our body from sun's ultraviolet rays. Melanin क्या होता है? ये chemical होता है अपने skin में which protects, जो अपने body को sun के UV rays या फिर ultraviolet rays से protection देता है, right? And how does it protect? Is if melanin content is more in our body, our skin becomes darker in color, and if melanin content is less in our body, our skin becomes fairer in color. So how does melanin work is whenever you are under the sun, if you are getting more UV rays, melanin ज़्यादा प्रोड्यूस होता है आपके बॉडी में. ठीक है, melanin कंटेंट ज़्यादा हो जाता है आपके बॉडी में. बिकॉज ऑफ दैट योर बॉडी बिकम्स डार्कर इन कलर. ओके, मेलानिन ज़्यादा होगा आपके बॉडी में तो बॉडी बिकम्स डार्कर इन कलर, एंड मेलानिन कम होता है आपके बॉडी में, योर स्किन बिकम्स लाइटर इन कलर. ठीक है, आप गोरे बनोगे अगर आपके मेलानिन कम है. ओके, एंड इफ़ यू हैव मोर मेलानिन इन योर बॉडी, योर स्किन विल लुक मोर डार्कर. अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल हियर. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज यू हैव टू गेस फ्रॉम दिस पिक्चर्स. ओके, इन पिक्चर्स को देखो और आप गेस करो कि वेयर डू दिस पीपल लिव. ठीक है, ये लोग कहाँ रहते हैं? डू दे लिव इन कोल्ड प्लेसेस, डू दे लिव इन मीडियम टेम्परेचर प्लेसेस, और डू दे लिव इन हॉट प्लेसेस. ओके, यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड नोट डाउन योर आंसर समवेयर. विल कम बैक टू द आंसर, ओके, इन सम टाइम, राइट? So let's discuss another question before we solve the previous question, that why do some people have fairer skin and some darker. कुछ लोगों में गोरे स्किन होते हैं और कुछ लोग के स्किन काले होते हैं. Why is it so? Okay, so this is mainly because of melanin content in our skin. अपने स्किन में जो मेलानिन जो केमिकल होता है, ठीक है, वो कितना क्वांटिटी में रहता है, that decides if you are darker in color or fairer in color. ठीक है, सो पीपल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर इज़ मोर सनलाइट. ठीक है, जहाँ लोग रहते हैं अगर उधर पे सनलाइट ज़्यादा पड़ता है तब क्या होता है, आपके बॉडी में मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एंड इफ मेलानिन इज मोर इन योर बॉडी, व्हाट डज योर स्किन बिकम्स? इट बिकम्स डार्कर. ठीक है, सिमिलरली ऑन द अदर एंड इफ़ यू लिव इन अ प्लेस वेयर देयर इज़ लेस सनलाइट. ठीक है, अगर कोई आप जगह पे रहते हो जहाँ पे सनलाइट कम पड़ता है, राइट, देन व्हाट हैपन्स इज योर मेलानिन कंटेंट बिकम्स लोअर. मेलानिन बॉडी में इतनी ज़रूरत नहीं है तो वो कम रहता है, राइट? देन योर स्किन बिकम्स फेयर. ठीक है, और आप गोरे बनते, राइट? सो if you can make the connection between more sunlight and less sunlight and hot places and cold places, you might be able to know that if there is more sunlight, अगर sunlight ज़्यादा है मतलब वो जगह कैसा रहेगा? गर्मी रहेगी, right? And if a place has less sunlight, that place will be a colder place. So coming back to the last question, okay, this is how we can guess
where these people live, the people at the left hand side, okay, since they are more fairer, वो ज़्यादा गोरे हैं, that then you can safely guess that these people live in a much colder place. ठीक है, वो ठंडी जगह पे रहता है जहाँ पे sunlight कम गिरता है. Okay, that's why they are fairer in color. Okay, on the other hand, if you go at the extreme right, okay, you can see that people here are of darker color. Okay, and you can guess from here, darker color means more sunlight पड़ता है उस place में. That means this is a hot place, and people who are in between comes in a medium temperature place, right? Next, you're going to see our final question. As you can see in this picture, this is a picture of an old man. So if you see a difference between an old man and a young man, you can easily find out in their skin that they have wrinkles. ठीक है, उनके झुर्रियाँ होती है ना. So the question is, why do old people have wrinkles? बूढ़े लोगों में wrinkles क्यों होते हैं, झुर्रियाँ क्यों होती है, right? So the answer for this is, when people become old, जब लोग बूढ़े होते हैं, the fat under the skin reduces. अपने skin के अंदर fat होता है, right? In the innermost layer, that is subcutis, you have fat. ठीक है, when people become old, this fat reduces. ये fat जो है ना घट जाता है, right? But the outer layer epidermis does not shrink to fit the body. ठीक है, अंदर का लेयर जो फैट है वो तो घट गया, लेकिन जो बाहर का लेयर है, दैट इज द एपिडर्मिस, वो छोटा नहीं बनता, वो जो साइज का है वही रहता है, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, बाहर का जो लेयर होता है वो लूज बन जाता है. ठीक है, बिकॉज दिस लेयर बिकम्स लूज, व्हाट इज फॉर्म्ड, रिंकल्स आर फॉर्म्ड. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट वी आर गोना सी work time, individual work time on this chapter. You have 3 levels here. Level 1 is fill in the blanks, level 2 is true and false, and level 3 is you have to answer in your own words. Okay, I'll send the PPT images in the WhatsApp group for you to take notes. Okay, and I'll send the answers for these questions by today or tomorrow. Okay, thank you.